It is said that she was extremely beautiful. The king had lots of desires and dreams for his girl child. He had this desire of getting this daughter married to a king, and that he had this desire of presenting a lot of gifts to her. This is actually the desire of every father for his daughter. The girl child grew to 16 years. Unfortunately, an accident happened, and in that accident, the beautiful girl child of this king died. The king was shattered, and so was the queen. And as you all know, in our Vedic Sanatan Dharma, there is this tradition. The tradition goes like this, that if anyone dies at a young age, that departed soul is actually buried and not burned. So, as per the Vedic rituals, the king went on to bury this 16-year-old daughter. So, a samadhi was formed. A samadhi was put in place for this departed daughter. You see, both the king and the queen had this desire of getting this female child married, and she would be presented with a lot of gifts and ornaments. So the king and the queen ornamented their daughter's body with all the ornaments and jewelry that they had prepared for this young daughter of theirs, and that they got this samadhi formed. As the samadhi was formed and all the rituals performed, and as the time went by, on the other hand, there was a very renowned and elevated sannyasi. Unfortunately, his guru Maharaj died. This sannyasi had to perform a fest meal for the final rites of his guru Maharaj. Unfortunately, this sannyasi had no wealth to perform this fest meal. As the sannyasi was wandering from place to place, he got to hear that the 16-year-old daughter of the king was given a final adieu with a lot of heavy ornaments and jewelries. This sannyasi got struck with the thought that what is the use of ornamenting a dead body? Now he had this thought that the body gets degraded but not the ornaments. Why should I not go ahead and exhume this body and get the ornaments and perform the final fest meal for my Guru Maharaj? No doubt the deed was wrong, but the objective was definitely pure. And as he broke open the samadhi of the queen's daughter, interestingly, the child, the daughter child, had some life left in her body. For your information, let me share with you that till the time entire body is degraded, life or pran hovers around the body. This is the reason why you see in a Vedic tradition the body is burnt. So till the time the final ashes are immersed in the waters, you see, almost around 13 days, the life hovers around the body.
So you see, the prawn on the line was hovering around the body of the daughter child, and as he was opening up the samadhi, he heard the voice of the daughter. Oh Sadhu, what are you doing? My body is not yet degraded. Should you not be doing this? The sadhu replied that, you see, your life is over, and with these ornaments, I would be able to do the final meal feast for my Guru Maharaj. The girl child replied, please do not touch this samadhi of mine. The bed on which I used to sleep, under that bed, there are two bricks of gold. You can ask my father for those two gold bricks. He would offer that to you, and you can perform the fest meal for your Guru Maharaj. This sannyasi approached the king the next day, and the king did not believe the entire story that my daughter must have had a conversation with you. Sannyasi replied that your daughter had told me that under the bed of your daughter you would find two bricks of gold. The king wondered that there is no harm in discovering that, and as the king went on to dig under the bed of his daughter, he found two bricks, and he offered those two bricks of gold to Sannyasi. Now, this sannyasi came to Amit Narayan Prabhu with these two bricks of gold. Actually, he went to a goldsmith, got them converted into currency, and he performed the final meal for his departed Guru Maharaj, offered a sumptuous meal to all the sadhus and sannyasis. You see, this is a very good seva that you offer meal and prasadam to sadhus and sannyasis. However, there came one problem. Now you see, this sannyasi actually had one limitation, and that limitation was that he actually did not keep anything for himself. Rather, he spent everything on the meal of his Guru Maharaj. However, you see, some of the sannyasis went on to reach a little late. And by the time some sannyasis went on to reach, all the meal was over. But you see, a grihast can definitely go ahead and tolerate the urge of the belly, but these sadhus and sannyasis definitely are not able to tolerate. And you see, this is what is called as an offense of the sannyasis. कि अपने आप को इतना बड़ा मान रहा है कि मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहा. You remember the story of Rishi Durvasa, who gave a curse to this king to become an elephant. And that is how such a great Vaishnava went on to become Gajendra. Rup Goswami was meditating that Radharani came to pluck the fruits, and the fruits was hanging high, and she requested Sri Krishna to bring the branch down. And as Radharani requested Sri Krishna to bring the branch down, and Sri Krishna, right at the moment, Srimati Radharani touched the fruit. He brought back the weight on the branch, and Radharani reached Sri Krishna, and Sri Krishna smiled at it. Just at that point of time,
a differently abled person was passing by Rup Goswami, and he felt that Rup Goswami is laughing and mocking at him. And Rup Goswami was cursed by this differently handicapped people. And then the story goes on the advice of Sanatana Goswami, a huge meal was organized and apologies were done. So, coming back to the story, this sannyasi offered the meal, but some sannyasis could not have their meal. Now, again, this sannyasi wondered that if I would approach the king, he would not help. So, again, he went to Samadhi. So, you see, the rule goes like this during the lifetime, this world, the materialist, the people of the material world will not give you any rest and peace. And again, he started opening up the samadhi and started collecting the ornaments of this princess. And again, you see, this girl appeared in the form of her voice. Once again. Now, this princess expressed a deep sorrow, deep pain. O sannyasi, what kind of sadhu you are? You're not letting me rest even after my death. You're taking away the ornaments on my body. This princess was in deep grief, and in that grief, she hurled a curse at the sannyasi. So initially, she shared her grief and then she cursed the sadhu that you are such a sinner, and this sinner, which is you, has touched my body. I would be a prostitute in my next birth because I have been touched by such kind of sinner, which is you. And because you have polluted me, I curse that you also be polluted. You would be polluted from your bhakti, and I would be the reason for you to become polluted from your bhakti. You see, dear devotees, a beautiful pastime background is being created. Now, this sannyasi tendered his explanation to this princess. Oh, dear princess, I am not doing all this for myself. Rather, this is for the seva of sadhus and sant. Now, this princess actually felt very, very grief. She was very, very sad. तुम्हारे उद्धार का कारण भी मैं ही बनूंगी। Oh, dear sadhu, undoubtedly that I would be the reason to get you derailed from your path of bhakti, and I would be the reason for your upliftment as well. In the next birth, this sadhu became Vilvamanda Thakur, and the girl was born as a very famous prostitute by the name of Chintamani. And yesterday, you see, you heard how the words of Chintamani pinned the heart of Bilvamangal Thakur and how he went to Vrindavan and took to the services of Guru Maharaj, that he started meditating upon the name of the Lord. And in his meditation, whatever he realized, he wrote in the form of Govind, Damodar, Strot. 71 shlokas are there in Govinda Damodar Shlok. The one who recites, understands, and hears this Govinda Damodar Strot, you see, his 71 generations are uplifted and elevated. So, yesterday, you see, one of your generations got uplifted
Now, somebody may question that this number one of generation which might have got uplifted begins from first or begins from 71. So I would ask you all to join me in what I would recite. Please make an attempt, dear devotees, to learn these shlokas in 7 days Katha. So here we go with Shri Govind Damodar Stotram. The shloka goes like this, which is there on your screens. जिहवे पिबत्स्वा अमृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवेति भज मन राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति भज मन राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादा हित चित वृत्ति दद्यादिकं मोह वशादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति भज मन राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति भज मन राधे राधे
गोविन्द राधे 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 गोविन्द राधे राधे सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. I extend my heartfelt gratitude and warm welcome to all the senior Vaishnavas of International Society for Krishna Consciousness. I also extend my warm welcome to all the devotees who have joined us on Zoom, Facebook, YouTube, and also live. In particular, I welcome the host family to have organized this 344th Bhagvat Katha. So I welcome you all to the second day's Katha. The hosts have organized this beautiful Katha in the loving memory of Vijaya Krishna Baskramba Kuganti Mataji. The hosts come from Delaware, Nikunj Gopika Devidasi Mataji, Niharika Mataji, Harini, Hemant, Vineet, Shadini, Arushi, Ridhan. Nikunj is actually Dr. Nina Ukambala. The kids of these families recite Damodar's truth almost every day. So I welcome each one of you to the second day's Katha of this Shrimad Bhagavatam Katha, the 334th Katha. So once again, kindly accept my humble obeisances, Radhe Shyam. So, Srimad Bhagvat Govind Damodar Srut is what we are going to discuss. Yesterday, we attempted to develop some understanding on the first shloka. Today, let us have a look at the second shloka, which is there at the bottom of your screens. The second shloka goes something like this. In the second shloka, numerous names of Sri Lord Hari is mentioned. Sri Vilva Manga Thakurji, through different names of Sri Hari, is invoking Hari to protect him, to liberate him. So he makes a request that he is sinking in the Bhavsagar. I am drowning.
I am struggling in this Bhavsagar. May you kindly liberate me through this. So he is looking forward to get liberated by Lord Hari. Dear devotees, those who do not know how to swim, and if that person drones in the water, he goes on to gulp down the water, right? So it's something like this that Bilvamangal Thakurji is attempting to say that he has drunk a lot of material world's water like Kam, Krodh, Lobh and Moho. And may Lord Hari help me out to get liberation from this world. But you see, Bilvamangal Thakur has a very unique way of making this request. So this is how the request goes. And the shloka goes like this. त्रायस्व मां केशवलोक नाथ त्रायस्य मां केशवलोक नाथ गोविन्द दामो धर्माधवेति सर्वप्रथम श्री बिल्वामंगल ठाकुर So first of all, Sri Bilvamangal Thakur goes on to say, बड़ा इजी है, आप लोग बहुत बार गाते होंगे, श्री कृष्ण विष्णु मधु कैट भारे, इसके अंदर उतरेंगे ना. the shloka might appear simple, but you see, as you dive deep into the shloka, it shall become tough for us to come out. So Bilvamangal Thakur goes on to say, first of all, Shri Krishna. आपकी जानकारी के लिए मैं कल बताऊंगा, जैसे आज हमने बिल्वामंगल ठाकुर के पूर्व जन्म की कथा सुनी. बिल्वामंगल ठाकुर के गुरु थे, Guru of Bilvamangal Thakur was Shivgiri Maharaj. Somgiri, actually. The spiritual master of Bilvamangal Thakur was Somgiri. परंपरा में सब चल रहा है. तो सोमगिरी ये शैव है, शिव जी के So, उपासक है. Somgiri actually was a Shaivite. भगवान ने उनके गुरु को स्वप्न दिया और But कहा, Lord appeared in the dream of उसे शिव मंत्र मत देना, Somgiri उसे and he directed मंत्र प्रदान. Somgiri that a devotee shall come and you should offer him Gopal mantra. युगल उपासक थे. So that is how Bilvamangal Thakur was a Yugal Upasak. यार, It's Yugal, युगल के उपासक, not Google. युगल उपासक थे. So he was a Yugal Upasaka. So बिल्वा मंगल ठाकुर जैसे हम लोग गूगल के उपासक है, कुछ भी हो जाए तो गूगल, लेकिन ये युगल के उपासक. So that way, Bilvamangal Thakur was Yugal Upasak. मंगल ठाकुर चूक नहीं रहे हैं. And you see, this perhaps is the reason कृष्ण के अनेक when it comes to reciting the names of Lord Shri Krishna, Bilvamangal Thakur शब्द क्या है? is not derailing at all. You see, what is the first word that he uses? He uses the term Shri. श्री विष्णु, श्री मधु कैट भारे, ये श्री शब्द सबके साथ So लगा. he is prefixing Shri with every single name of Lord Hari. इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर कृष्ण से पहले राधा रानी का स्मरण कर रहे So because he's a Yugal Upasak, so even before reciting the name of Krishna, he is invoking Radharani. So Shri actually is reserved for Radharani. In our Braj, in Barsana, they don't say that we're going to Radharani's temple. They say that we're going to Shriji. We're going to Shriji's temple or in Shriji's Darbar. So Shri actually is Shrimati Radharani. बिल्वा मंगल ठाकुर ये भी जानते हैं कि सीधे कृष्ण को
तो काम नहीं बनेगा. So Bilmangal Thakur knows this pretty well, कृष्ण that के if you भजन में directly invoke भागवत करने Shri, वाला if you invoke Krishna, राधा रानी he के might भक्त not yield, but if you go to हमें Krishna through कृष्ण को Radharani, पहचानना होगा. और definitely इसे you'll attain Shri दामोदर Krishna. स्तोत्र के दूसरे श्लोक में Hence, जहाँ in the second कृष्ण shloka of राधा Govinda Damodar यानी shloka, राधा रानी के wherever Krishna is invoked, before that Radharani has been invoked by addressing her as Shri. So Shri here represents वैष्णव भक्त Radharani. देखते हैं तो एक भक्त बोलता है हरे कृष्ण, दूसरा बोलता है जय श्री कृष्ण, So तीसरा तो बोलता sometimes है when devotees जय meet, श्री गोकुलेश है. a devotee say Hare Krishna, the other one replies Jai समानांतर Shri में फिर Krishna. वहां झगड़ा चलता है. The third would say जय Jai श्री Jai कृष्ण Shri कहो, Krishna. हरे कृष्ण कहो, So might you say जय श्री anything, Hare Krishna, गोकुलेश Jai कहो, Shri ये सब Krishna, एक Jai ही है. Shri Gokulesh, they're all one by element. हरे माने हरा, Hare means Hara, शक्ति राधा, the और Haladini श्री power, कृष्ण potency इसका of Shri अर्थ भी Krishna. राधा. बस केवल अंडरस्टैंडिंग और समझना होगा. तो श्री कृष्ण So, Vil Mangal Thakur says लेकिन Shri आपके समझ Krishna. में आ रहा है श्री माने श्रीमती राधा रानी. So, Shri means शिव Srimati लोगों ने जितने Radharani. भी मंदिर बनाए तो पहले राधा रानी की स्थापना All पहले the की है. temples राधा गिरधारी, राधा constructed कुंज by बिहारी, Srila राधा रमण, Prabhupada, they राधा all begin माधव, with the name of श्रीमती राधा. Srimati Radharani. और हम कृष्ण के Always. उपासक तो बाद में हैं, See, we are राधा रानी के उपासक worshippers पहले of हैं. Krishna later, but we are worshippers of Sri Mati आगे बढ़ते हैं. Radharani before बिल्वा मंगल that. ठाकुर पहले तो So, कृष्ण के अनेकों नाम Vilmangal Thakur श्री goes कृष्ण on to recite numerous names of Sri Krishna. तो कृष्ण किसे कहते हैं, कृष्ण का अर्थ क्या है. So, what do we understand by बोलो हरे Krishna कृष्ण हरे is what we कृष्ण. have to understand. कृष्ण के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन So, you एक see, अर्थ में आपके बीच में रखूं. कृष्ण का पहला अर्थ है ऑल Krishna पावरफुल, has many meanings. The first सर्वाकर्षक, meaning of सर्व Krishna आकर्षक, is all जो इस attractive, दुनिया में सबको the आकर्षित one कर ले. who can attract अरे बोलो everyone in this सर्वकर्षक, world, not पशु just the पक्षी humans, but लता फल even पेड़ और पौधे को even the अट्रैक्ट कर ले. trees, the animals, the climbers and the इसे कहते हैं creepers, कृष्ण. everything. That is Krishna. कृष्ण माने आकर्षित करना. जैसे So Krishna means to attract. Just as a magnet attracts लोहे को iron आकर्षित towards it, करता है, similarly Krishna attracts everyone ऐसे towards कृष्ण him. सबको, सबकी दृष्टि को आकर्षित कर लेते हैं. So that is how कभी Krishna कभी goes on to कंस attract वहां आता everyone. था और असुरों को भेजता था, जाओ कृष्ण को मार कर आओ. कंस के द्वारा भेजे हुए असुर भी एक बार तो सोच ही लेते थे Whenever कि Kansa कृष्ण की इस sent लड़की को मारना चाहिए. demons to kill Sri Krishna, you see, for कितना once, अच्छा लड़का even है, the demons had a thought इसे that मारना ठीक नहीं है. why should we be killing such a ये जो beautiful, attractive ये boy? खर दूषण और So ये you सब see, when बनाए गए थे Kardushan and मारने all, के लिए, when they साथ came में to kill Sri परमात्मा Ram, ने अनाउंस किया you कि रुको see, रुको रुको, इसको Kardushan went on to halt their armies for a while. इसको They किडनैप करो, said, let us फिर abduct these two इसको लंका boys लेकर जाओ. and take them to लंका Sri लेके Lanka. बोले लंका के And we जो would, चौराहा होता है ना, you उस see, we चौराहे would पे place ऐसे them पोस्टर at the चिपका देंगे. ऐसे इस crossroads. लड़के को एक कांच की पेटी में रख देंगे, रोज सुबह नहा धोकर इसको देखकर दिन शुरू करेंगे, हमारा दिन सुधर जाएगा. You see, we would begin our day by having a glance at this young boy. मैं ये कह रहा Such a था beautiful कृष्ण boy माने is he. अट्रैक्टिव, So Krishna means आकर्षक, attractive, सर्वाकर्षक, जो all मनुष्य को तो attractive. आकर्षित करता है, असुरों The को भी one आकर्षित who करने attracts वाला. not just the humans but even the demons. असुर भी That is अट्रैक्ट Krishna. हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं. Even the asuras gets attracted. आकर्षित करना. So one meaning of Krishna is to कृष्ण का attract. दूसरा अर्थ है, Another meaning ये of Krishna उपनिषद में कहा is, गया. and this उपनिषद has में been लिखा है, said by ये Upanishads. शब्द तो आप पकड़ रहे हैं ना, श्लोक बंद कर देता हूँ 1 मिनट. कृष्ण का दूसरा अर्थ उपनिषद में कहा, कृष्ण, उसमें 2 शब्द है, कृषि और अण. So Krishna basically is कृषि का composed of अर्थ two है words, कृष्ण Krishi and उत्पन्न. Ana. Krishi जैसे means शास्त्र में लिखा है, कृषि originate. भूवाचक. भू माने धरती, धरती माने जो उत्पादन करती है, उत्पन्न
So Krishi in Krishna is actually to produce or origin. And Ana in Krishna means pleasure or Anand. So Krishi is Bhuvachak and Ana is pleasure. Hence the meaning of Krishna is. So Krishna means the one who goes on to produce pleasure all the time, ever and ever, is Krishna. And that is the reason when in Gokul Krishna actually appeared, Brijvasis went on to say and sing something like this. So Brijvasis sang this song, and not that they say that Krishna is born. जय कन्हैया लाल की हो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, हे नंद के घेरा नंद भयो। श्री आनंदमय भगवान की। All glories to Shri Anandmay Bhagwan. So at the house of Nand Maharaj, when Lord Shri Krishna appeared, it was not said that Krishna has been born, rather it was said that pleasure has been born, Anand has been born. And 10 lakh years before, when Lord Shri Ram appeared at the palace of Dashrathji, Vashisht Maharaj at that time said, "O king, this is not just an ordinary boy. The pleasure that one gets in crores and crores of universe, and your son is the ocean of pleasure. And one drop of the pleasure from this ocean goes to crores and crores of universe. And hence I give the name to this child of yours as Ram." So one meaning of Krishna is all attractive. And the second meaning of Krishna would be the one which keeps on producing happiness and pleasure indefinitely. There was the Saint Swami Akhandanand Saraswati. लेकिन जिसका है उनका नाम लेना तो जरूरी है ना। प्रज्ञा चोरी आजकल बहुत होती है, ये तो करना नहीं है। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती, So Swami Akhandanand Saraswati, समाज के लिए, भक्तों के लिए काम किया, who worked a lot for the devotees. You see, Swami Akhandanand Saraswati used to say, the pleasure which is found in crores and crores of universe, you put them together at one place, you see. So the pleasure of crores and crores of universe we put at one place, and this pleasure would actually transform into Shri Krishna. So pleasure, when transformed into or solidifies into a solid object, that is Ghanashyam. So
that is Anand Ghan Vigrah, that is Anand Ghan Murti Shri Krishna. कृष्ण का एक अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव। So one meaning of Krishna is all attractive. यदि देते चलूं, शिक्षा देते चलूं, And if I was to also give you a principle, मैं खुद ही ले रहा हूं। कृष्ण का पहला अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव। so first meaning is all attractive. मोह माया में अट्रैक्ट तब तक रहेंगे We all shall remain entangled in attractiveness of this material world till the time we do not see Krishna. Once you have seen Krishna, your attraction for worldly material things will be coming to an end. The second meaning of Krishna is pleasure or anand. सारे जीव दुखी तो है, No doubt that in this material world, तो दुख the living entity suffers and is under pain. So if you need pleasure and happiness, जनमूर्ति the ocean of happiness and pleasure, Shri Krishna, you must seek refuge at his lotus feet. धोबी के पास जाकर कहोगे भाई साहब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख दूर करो, वो खुद ठीक से खाता नहीं है, रोटी पर घी नहीं लगाता, Do you think तुम्हें क्या देने वाला है? your problems can be solved by somebody who himself is in a problem? ये मेरा मशीन कहता है कि और गाओ। So you can only approach somebody who is always in pleasure. Only such a person can go on to offer you pleasure and happiness, and that is Shri Krishna. कृष्ण का तीसरा अर्थ है, The third meaning of Krishna व्याकरण के is, अनुसार देखो, as per the rules of तो grammar, कृष्ण का तीसरा अर्थ है the third meaning काला। of Krishna is actually something like this. So Krishna means black. काला है, श्याम वर्ण का है। Krishna has darker इस complexion. दुनिया में सबसे अच्छा रंग कौन सा? तो बोले काला। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी रंग है ना, वो सारे रंग काले रंग में। What is the best color in this world? It is black. Why? Because black goes on to absorb all colors in itself. तब तक है जब तक ये अपने आप में है, जब ये काले में मिल जाता है। You see, any color, be it blue, green, or red, has its identity only till the time it is all by itself. But when it merges with black, they have no identity. So the meaning is that we are bound in this material world only so long as we are not merging ourselves with Krishna. So the meaning is, just as all the colors are present in black, similarly, all the bhav are present in Krishna. Dasa, Sakhya, Vatsalya, all kind of ras are found in Krishna. So the reality is Krishna is black complexion. Krishna was teased by Balram that, look, Kanaya, you're not the son of Yashoda and Nand. Krishna would question, why is it that I am not the son of Nand Baba and Yashoda? So Balram would very often tease Krishna by saying that Nand Baba is fair complexion and so is Yashoda Maya, but you're dark complexion. So for sure you have been picked by them from some fair. तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। जब इस प्रकार से गोपियां कृष्ण को पूछती थी ना कि कृष्ण तू काला क्यों है, so the gopis would often ask Krishna, oh Krishna, why are you black? So Krishna would reply something like this. मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया,
मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ, मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। कृष्ण कहते हैं देखो मैं इतना काला नहीं हूं, आप लोग जितना मानते हो। So you see, Krishna goes on to explain to gopis, oh gopis, I am not that black to the extent that you call me black. Actually, I have been born on the dark night. And then you see, my mother always makes me drink the milk of a black cow. So gopis would say, oh, Krishna, nobody becomes black because he is born on a black night or drinks the milk of a black cow. To this, Krishna would reply, O gopis, the shoulder cloth that I carry is black and its reflection is falling on my face. That is the reason I appear black. To this, gopis would say, Oh Krishna, you're a big liar. Now, Krishna would reply something like this. और काली नाग को नाथ लियो, मैंने काली नाग से युद्ध कियो, और काली नाग को नाथ लियो, मैं फण फण पे नृत्य कियो, इसीलिए काला हूँ, मैं फण फण पे नृत्य कियो, इसीलिए काला हूँ। कृष्ण कहते हैं, Krishna would reply something like this. Oh, you gopis, you see, I went on to fight with Kalia serpent and I danced on the hood of this serpent Kalia. And the reason of me appearing to be black is because day in and out I am at the banks of river Yamuna and I take bath in Yamuna. So you see, because I've been basking in sun at Yamuna's bank, that is the reason I appear black, and it's only a story of 3-4 days. Now again the gopis would say, Oh Krishna, you're a bluff person. You are black. Now, Krishna goes on to become annoyed at the gopis. And he replies something like this. रंग काला, इसीलिए काला हूँ, तेरी चुनरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। ये तेरी गोरस कृष्ण क्रोधित। So, Krishna, in a very annoyed mood, said, Oh gopis, the pottery that you carry is black. Your heart is black. And the chunni, the wheel that you carry on you is black. That is the reason I appear black. Must you remove your wheel and see how fair I am? Dear devotees, must you focus that we are focusing upon the term Krishna in the shloka. So Krishna would hurl at the gopis saying that your wheel is black, your pottery is black, and that is the reason I appear black. Now the gopis removes the wheel and say, look, even we are white and fair complexion, but still you appear black. At this, Krishna replies something like this. नैनों में मुझको बिठाती है,
तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। कृष्ण कहते हैं कि देखो, मेरे काले होने का एक ही कारण है कि मैं घर से निकलता हूं ना धोकर, और तुम लोग अपनी आंखों में 1-1 किलो काजल लगाकर आती हो, काजल। और फिर मैं जब तुम्हारे सामने आता हूं तो घंटों भर तुम मुझे देखती हो। So Krishna goes on to say, "O gopis, you apply so much of kajal in your eyes, and when you're face to face with me, for hours continuously you gaze at me, and it is because of your gazing that I appear black." So Krishna goes on to say that because you apply so much of kajal in your eyes and continuously gaze at me, stare at me, that is the reason that I appear black. Otherwise, I am fair complexioned. राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, काले सरकार की। इस प्रकार In this manner, the third meaning of the word Krishna would be dark complexion. इस भजन में कृष्ण ने वर्णन किया। श्री बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण, हे कृष्ण। फिर बिल्वा So मंगल Bilmangal Thakur goes on to say, and now he addresses Krishna as Vishnu. अब विष्णु शब्द जब हम सुनते हैं ना, ये हमारी स्थिति में बता रहा हूं, हम सबकी स्थिति। आप इसे आंखें बंद करके बोलो विष्णु, तो आपको क्या दिखाई देगा? At the moment you utter the term Vishnu, that four-handed Vishnu comes to your mind, right? But if I was to tell you some secret, once I was sitting beside Parampurja Radha Govind Goswami Maharaj, and in the Katha there was conversation and discussion about Krishna and Vishnu. So after Katha, a man appeared and he questioned Guru Maharaj, "Oh Maharaj, what is the difference between Krishna and Vishnu?" And Guru Maharaj got outraged. "Is this what you have understood? There's no difference between Krishna and Vishnu. They are both the same." This devotee got frightened. Now, please understand the principle and the understanding. You see, understanding of neophyte devotees is a little incomplete. You see, Vishnu is four-handed and that he stays in cosmic ocean. He is known as Vishnu. Now, this is a separate case altogether. But Krishna also has a name that is Vishnu. वृंदावन विहारी श्याम सुंदर कृष्ण का नाम है विष्णु। हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। So Hari has 1,000 names, but Krishna has crores and crores of names. इसलिए ये हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, समझना होगा कि जब हम विष्णु बोलते हैं तो किसको इंडिकेट करते हैं। नहीं तो मुझे So please understand, when you would utter the term Vishnu, whom are you invoking? ये सब कृष्ण की चर्चा चल रही, तो उसमें विष्णु शब्द क्यों लाया?
घुसाया। तो आचार्य जब कुछ कहते हैं तो बहुत उसके पीछे भाव होता है। So you see, whenever acharyas would use a particular term, there would be a lot of meaning to it. Here, Vishnu does not represent the four-handed Vishnu. Rather, this Vishnu here represents Krishna, the one who plays the flute. The two-handed Krishna is actually Vishnu. क्यों? कृष्ण Now, को let us विष्णु understand कहते why हैं Shri Krishna is क्योंकि also दोनों called का as अर्थ Vishnu. होता है। You all are in the कृष्ण habit को of क्यों getting to विष्णु know कहते things with हैं? evidence. कृष्ण So के the evidence अंदर is that विष्णु Sri नाम का एक Krishna गुण है। has a ये quality विष्णु शब्द जो है which ना, is called as ये Vishnu. नाम भी कंसीडर होता है और ये So गुण this भी term कंसीडर Vishnu होता है। is considered as a name as well as a विष्णु को quality. विष्णु इसलिए कहते हैं क्योंकि Krishna कृष्ण के is अंदर referred to as एक Vishnu चौसठ कला है। because Krishna has a lot उसमें of एक गुण है विष्णु। qualities. He has 64 colors with विष्णु him, माने and विष्णु one का of that is व्यापक। Vishnu. Vishnu actually means Vyapak, अनेकों wide or स्थानों पर extended. व्यापक रहे, इसे So, विष्णु कहते हैं। somebody who can be present ये at numerous कृष्ण के अंदर places एक at गुण any है, given point of time is इसलिए called as कृष्ण Vishnu. को विष्णु कहते हैं। And because Krishna has such quality तो with him, हम that's सब the reason he is कृष्ण के also उपासक called as हैं। Vishnu. You see, we all are कृष्ण के उपासक हैं, Upasak of इसीलिए हम जब Madhurya. विष्णु बोलते हैं तो So when we say विष्णु Vishnu, इंडिकेट होता है। basically it indicates Krishna. अच्छा, प्रमाण कि Now, if I was कृष्ण to को talk about विष्णु इसलिए evidence, कहते हैं क्योंकि कृष्ण के अंदर विष्णु so का the गुण है। evidence that विष्णु why माने व्यापक Krishna रहना, is called as Vishnu because Krishna has the quality of Vishnu being सर्वव्यापक में भी होना, वहाँ omnipresent पे भी होना, कनाडा में and भी होना, simultaneously अमेरिका में भी being होना। present in India, Canada, US, it's really everywhere. तो कृष्ण में ये गुण कहाँ, हम बाहर नहीं जाएंगे, भागवत में ही यदि रहे, भागवत की So, बाउंड्री में, in case I was तो to quote भागवत from में Shrimad इसका जो Bhagavatam, वर्णन है in the first कि जब canto, the mention अश्वत्थामा goes something like this that when अश्वत्थामा की Ashwatthama चर्चा हो रही है। went on to अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, attack with Brahmastra, and when कि मेरे Uttara बेटे की रक्षा कीजिए, requested at the lotus feet of Sri Krishna to protect उस her समय son, भगवान श्री कृष्ण ने दो रूप धारण कर लिए। at that point of time, Sri क्षत्रिय Krishna took वेशभूषा two धारण forms. करके कृष्ण In the उत्तर form दिशा of में चले गए। four-handed form, एक Krishna हाथ में गदा, entered एक हाथ में चक्र the लिए garva of उत्तराखंड में Uttara जाकर भगवान रक्षा किए, और वही and ध्वज धारण करके protected कृष्ण that child. अयोध्या के आगे बाहर खड़े And रह गए। in the two-hand इसलिए form, Krishna दो रूप stood धारण किए। in आगे front of भाष्य में वर्णन है, Uttara इसे to कहते हैं protect विष्णु। her. This is विष्णु what माने is एक called as आदमी Vishnu. अनेकों हो जाए, एक आदमी अनेकों स्थान पर अनेकों So जगह Vishnu पर हो। means one person who can चलो be ये present at numerous भागवत के दशम places, स्कंद में एक one at वर्णन the है same time. कृष्ण की Anyhow, in the 10th 16,000 canto of Shrimad पत्नियां Bhagavatam, हैं। there's a mention that Krishna has 16,108 एक पत्नी queens. का नाम है So नग्न जीती, one of the wives' name is जिसका नाम है Nagnajiti. सत्या। Actually, her name is Satya. नग्नजीत की कन्या होने के But कारण because she was the daughter of नग्नजीत कहलाती है। King Naganya, that's the reason she came to अब be called as नग्नजीत ये Nagnajiti. अपनी बेटी का विवाह करने के लिए So King Nagnajit went on to उन्होंने शर्त रखी organize थी a कि जो condition, राजा had put a condition क्षत्रिय that a king or a मेरे राज्य Kshatriya में आएगा, would come to my वो 7 kingdom, बैल बुल, and I have तो 7 देखते हो bulls. लाल कपड़ा दिखाते हो सिंगड़ा मार के वो बुल बहुत दौड़ता है, ऐसे एक में ऐसे 7 बुल थे। So the शायद 7 आपका bulls नाम that भी I है have. ये सुरेश भाई और सब लोग। तो 7 हट्टे घट्टे बहुत बड़े बैल थे, सांड थे, और राजा नग्नजीत ने कहा कि ये So 7 King Nagnajit had put a condition कोई अपने कंट्रोल में that ले ले, anyone who would be इन able to सातों control बैल these को 7 रस्सी bulls डालकर ऐसे अपने and हाथों put में the बांध ले, rope across the तो nostrils उसका of the 7 bulls, सत्या I will get my राजकुमारी बन daughter जाऊंगा। Satya married ये to such a brave लड़की man. बहुत सुंदर थी, And you see, और this दरबार princess में was देखा very, very देश beautiful. दुनिया के राजा महाराजा आए थे, So, kings and लेकिन 7 princes from सांड many उसको countries had संभालने की बात come. तो दूर रही, But you see, वो none of किसी से them कंट्रोल could नहीं कर not पाई। even have a control
over one bull, forget about the seven bulls. And you see, Sri Krishna was traveling and passing across this kingdom, and now Krishna entered the assembly of the king. Now, this is the time Krishna went on to enter the podium. So, what did Sri Krishna do? This is mentioned in Shrimad Bhagavatam. You see, I'm talking about the word Vishnu. So, Krishna basically went on to expand himself in seven forms. And through these seven forms, he went on to tame the seven bulls and made the rope pass through the nostrils and controlled each of the seven bulls. So, in case of Uttara, Lord Krishna took to two forms, and in case of Princess Nagnajita, Sri Krishna went on to take seven forms. Now, if you recall, Raja Kalnemi went on to abduct 16,108 princesses. And then you see Narkasura and all. So Krishna went on to liberate and free those 16,108 princesses. Now these girls said, "Oh Krishna, nobody shall marry us now. May you please marry us." So Krishna, under an auspicious Muhurat, went on to marry 16,008 times. That means in that same Muhurat, Krishna expanded into 16,108 Krishnas. So at that point of time, there would be 16,108 mandapas, and on every mandapa, Sri Krishna was sitting. This is what is called as Vishnu Vyapta. So please understand, Krishna is Vishnu. लेकिन बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण ही विष्णु है, कृष्ण को ही विष्णु कहा जाता है। और क्यों, ये इसके प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। उत्तरा के केस में 2, नग्न So in case of Uttara 2, Nagnachita's case 7, and in case of his own marriage, 16,108 forms that he took. Now, let us talk about one more beautiful pastime. On the night of Sharat Purnima, Krishna went on to play the flute, and all the gopis came for us. So there were 33 crores gopis in Maharas. So Krishna expanded himself into 33 crore Vishnu. This is what is called as Vishnu. जिसको पूरी दुनिया विष्णु विष्णु कहती है, उस विष्णु के जीवन में पूछिए आपने कभी 33 करोड़ रूप धारण किया? लेकिन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण 33 करोड़ रूप धारण करके एक गोपी एक कान, एक एक गोपियों के साथ एक एक कृष्ण, और फिर रास लीला का। So with every gopi there is one Krishna, 33 crore Krishna dancing with 33 crore gopis. So Bilvamangal Thakur says Shri Krishna is Vishnu. So ऐसे भगवान श्री विष्णु जो सर्वव्यापी है, So such Vishnu who is all present, I offer my obeisances to him. So let us go further in the shloka. भक्तानुकंपीन भगवन मुरारे। अब तीसरा भगवान का स्वरूप है मधुकैट भारे। The third form of Lord Shri Krishna is Madhukat Bhare. O Lord, you have killed the demons Madhu and Kaita. मधु कैटव, और फिर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अरे, वो मात्रा निकाल देंगे ना भ में से, तो मधु कैटव अरे, अरे माने शत्रु। So Are means enemy.
सो कृष्ण को बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं, कृष्ण कौन है? So Krishna is addressed by Bilvamangal Thakur as Madhu जिसने Cat मधु और Killer. कैटव को मारा। So the one who had killed Madhu and Katab demons. ये मधु कैटव को यहाँ पर क्यों ला रहे हैं? Now, सोचिए। try to understand this. Why at all Sri कृष्ण ने Bilmangal कैटव Thakur is roping in Madhu Katab here? होलसेल में मारा। In Mahabharat, Krishna killed so many people. कृष्ण को What is the significance of Madhu Katab? थे छोटे लेकिन Now you नीचे see, बहुत बड़े। Madhu Katab had मधु कैटव given a को क्या strong challenge to Sri Krishna actually. सुनाते हैं? Let me share with you the entire story related to ये Madhu कहे Katab. कृष्ण आप मधु और कैटव के शत्रु हो, मधु कैटव को मारने वाले हो। So Bilmangal Thakur ये says, मधु "O कैटव का Krishna, जन्म you are the कैसे हुआ? slayer of Madhu और and इनका Katab." वध कैसे हुआ, सुनिए। So let us hear the story of वर्णन है, the emergence of Madhu Katab and how भगवान they were क्षीर killed. सागर में शयन कर रहे थे। So Puranas go on to mention और like क्षीर this: सागर में Lord शयन Shri करते Krishna करते was योग resting निद्रा में चले गए। in भगवान his cosmic ocean and he entered into Yog Nidra. और उस योग निद्रा में And in भगवान that के Yog कान से Nidra, मैल निकला। from the ear of देखो, कान में Shri, मैल नहीं होना चाहिए। ये you कथा से see, और कुछ समझ में आए या न आए, the dirt came तो out of नीचे the कमेंट में डाल ear. देना। ये बहुत बड़ा भारी पड़ जाएगा यदि कान में मैल होगा तो। कथा ठीक से सुन नहीं पाओगे ना यार। तो भगवान So क्षीर some सागर में शयन कर earwax रहे थे came out of और the इस ear एक of कान Lord से Hari. दूसरे कान से थोड़ा मैल निकला और उस कान के मैल से दो असुर ने जन्म ले And लिया। from this earwax developed two कान demons. का मैल और असुर के रूप में प्रकट हो गया। So the earwax of Lord अब भगवान तो सोए हुए थे योग निद्रा went में, on to emerge तो दो असुर like the जन्म two लिया, इसलिए भगवान से ही demons. जन्म हुआ ना। लेकिन कान का कचरा था तो ये आसुरी रूप धारण किया। और कॉमेडी ये हुआ कि ये भगवान के आगे पीछे घूमे, बोले ये बंदा है कौन? Now these two demons ये पानी ही started पानी है, hovering सब कुछ हरा भरा लग around रहा था, Sri Krishna सब only. कुछ देख रहा था। And these two demons were kind of और क्षीर सागर confused का तो कोई what was going on. वो पानी के Now, नीचे Lord उतरे actually was in और deep देखा कि sleep. यहाँ तो जल ही जल है, जल ही जल है। कारण These समुद्र two का जल demons वो चू रहा था। भगवान वासुदेव की कृपा actually से टप 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 नीचे ब्रह्मदेव noticed that there's all water everywhere. तो वो टप 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 आवाज आ रही थी। तो ये समझ गए कि हाँ तप 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 Now, तपस्या this as this water कहते was falling down, असुर होकर भी the समझते हैं। sound that came बड़े was क्लियर कहते हैं कि हरे tup, कृष्ण tup, महामंत्र बोलो, tup. And these demons thought that, all right, this sound is asking them to go for tap, जो भी है tap, हमें and आगे tap. बढ़ना है, That is meditation. तपस्या करनी पड़ेगी। So these demons और कैसे thought आगे that in बढ़ेंगे? case we need to है ना? go forward, बहुत we पीछे must नहीं, बहुत दूर meditate. आगे जा सकते हैं। उसके लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान के कान से निकले हुए मैल ने असुर का रूप धारण किया। एक हुआ मधु और दूसरा हुआ कैटव। So these two demons actually were Madhu and Katab, and they went on to do 4 वर्ष तपस्या tapasya. कर लिए And their tapasya continued for और भगवान तो almost सोते थे, 1,000 years. योग निद्रा में थे। Lord was still लेकिन in Yog भगवान से एक Nidra. शक्ति प्रकट हुई, भगवती माँ And पार्वती from ने Lord, प्रकट हुई। actually, one potency emerged, and that भगवती was सोते Devi हैं तो हमको क्यों Bhagavati. परेशान करना, तो भगवती प्रकट हुई। So Bhagavati thought that why to trouble Sri हाँ Krishna? भाई बस करो, अब बहुत तपस्या हो गई, Now this क्या Bhagavati चाहिए, told these क्यों तप कर रहे demons, हो? what are you meditating for? What is बस your हमें क्या desire? चाहिए, हमारी इच्छा पूर्ण Now करो, these two बोलिए हमें हमको demons चाहिए, बोले answered हमें that we have इच्छा some desire. वरदान चाहिए। These two demons asked Bhagavati that जब they तक want Ichha Mrityu. हमारी इच्छा न हो, That is, till the time they themselves desire their end, हम न मरे। nobody should be able to kill भगवती them. ने कहा तथास्तु, ब्रह्मचारी Bhagavati इस दुनिया में replied, कौन so मरने be की it. इच्छा करता है? और ये लोग ने क्या वरदान मांगा? जब तक हमारे मरने की इच्छा न हो तब तक हम Now नहीं मरेंगे। imagine, nobody ऑलमोस्ट ever will असंभव have है, a desire क्योंकि मरने की इच्छा तो to बिल्कुल भी die. कभी करेंगे नहीं। And मरने these की two इच्छा got the करेंगे नहीं boon तो that मारेंगे कौन? only कोई नहीं
till the time they do not have a desire to die, they will not die, and they will die only when they will have such a desire. So, in a way, these two demons went on to become immortal. And you see, as it so happens, power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. And now these two demons thought that who is the most powerful person here? And the answer was Brahma. Now they both challenge Brahmaji for war. ब्रह्मा ने कहा हमारा मूड नहीं है, बोले तुम्हारा मूड नहीं तो क्या हो गया, सावधान, पहले के असुर किसी को मारने से पहले Now सावधान you रहते थे, see, आज के Brahmaji असुर said, why at all I should fight? सावधान छोड़ो, But भागो these demons said, no, you have to fight with us. अरे So भाई these two किसी को demons मारना है तो सावधान तो करना called चाहिए, upon Brahmaji and said, Savdhan. आपने महाभारत They में पढ़ा call होगा, attention सावधान, और फिर बाण चलाते थे, to कितनी Brahmaji. वीरता होती थी। So आज कृष्ण basically, you see, शरीरी कायर हो in गए हैं, today's world, there is so much अरे कुछ हो cowardice. रहा है अचानक बैठ People जाते हैं, just do उनमें not कोई वीरता नहीं है और सोचते हैं हमको जन्नत मिलेगी, call the जन्नत attention में of जाएंगे भगवान की the प्राप्ति person होगी। being attacked, and they attacked, तो ये and they असुर attack लोगों ने क्या किया, वो without सावधान किए, हम calling for भाग गए, attention to the person ब्रह्माजी who's वहां being से बाण attacked. दबाकर भागे, Brahmaji actually started running for his own protection, and he reached the coast of cosmic यहाँ ocean. विधाता बहुत है, ये दोनों हाँफते हुए क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, So these demons तब had gone on to develop heavy ब्रह्मा जी ने breath, and they भगवान से also पूछा, तुम reached सो क्या रहे हो, the आपके bank सामने of बहुत बहुत आपत्ति आई है, cosmic ocean. विपत्ति आई है, Brahmaji उठो संघर्ष invoked करो। Lord अब भक्त के कारण फिर भगवान को that जागना Lord पड़ा, protect me from these two demons because of the devotee's call. भगवान ने कहा कि ए Lord demons, came out of his yog nidra. मुझे बताओ तुमको क्या चाहिए, Lord said, O demons, अब spare भगवान के Brahma, कानों से दोनों and you tell ज्ञान हो गया, me, भगवान ने कहा ये what बोलने is वाले it लोग that you हैं, desire? ये अब एक साथ ज्यादा जमा हुआ और ये असुर बन गए, बोले तुमको चाहिए क्या, बोले हमको युद्ध करना है। तो Now, भगवान विष्णु ने कहा these ठीक है, demons said that we want to fight. कृष्ण ने Lord कहा Vishnu said, Lord Krishna said, okay, you fight with me. And these two demons said, all right, we would definitely fight with you. Now imagine, तो Krishna कैसे is एक साथ one बैठे and थे, these two brothers are वो two बस in एक number. कृष्ण के साथ युद्ध करता था, Now these two demons और had this कृष्ण के planning साथ that युद्ध करते only करते एक one थक would जाता, एक have साइड में चला जाता, दूसरा आ जाता, a contest with Krishna until the वो time आराम he से develops बैठा था, fatigue. थोड़ा The other भगवान person would rest and the other person would युद्ध कर रहा join था, by the time कृष्ण के first साथ युद्ध दोनों demon would करते have करते fatigue. 5000 वर्ष बीत गए, So in this दोनों को manner, थका दिया। one after the other, both भगवान ने these कहा Madhu and Keta would fight with अब Lord. साले And in दोनों this way, मैं 5,000 अकेला हूँ, years went by. मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, उन्होंने कहा Now चलो Lord said, नीचे oh, चले Madhu गए, Keta, let me have some rest. You are two and I am one. Let me have some rest and then we will तुम continue the तीन fight. मिलकर, मैं अकेला हूँ, Madhu तुम Keta दोनों said, मिलकर no, लड़ this लेना is मेरे बिना, cheating. हमारा कोई To which विकल्प नहीं Lord है। भगवान ने said, कहा you युद्ध करने को see, मैं तैयार हो गया, how लेकिन come तुम it's a दोनों को रेस्ट cheating? तो देना I चाहिए, need some थोड़ी rest. देर रेस्ट मुझे यहाँ करने दो, फिर मैं युद्ध करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मधु कैटब ने कहा नहीं नहीं ठीक है, बेचारा थक गया है। अब भगवान मन में सोचे यार कुछ कर, नहीं तो ये दोनों छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान के ही अंश थे ना, बाहर के Madhu and होते, Ketab agreed भगवान के to ही allow अंश the थे। Lord to have some rest. Now Lord भगवान is ने सोचा perplexed इसके that पहले must he do असुरों को something ठगने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, to get rid of these two और ये demons. लोग Now जिस Lord प्रकार was नहीं जीते, जो wondering कहीं नहीं that हारते, earlier I took Mohini Roop वो to स्त्रियों की defeat दृष्टि these उन पुरुष demons. के रूप के सामने हार जाता है, So इसलिए Lord संतों ने कहा कि pondered देवियों that के नैन, those देवियों के बैन के who are सामने बड़े not बड़े लोग गिर जाते हैं। defeated by anyone, but they would definitely be defeated माँ भगवती against a woman. इनको वरदान मिला और सब कुछ हुआ, माँ भगवती बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण At कर that लेती है। time, Devi Bhagavati took the form of a अब भगवान ने very देखा सब beautiful संभाल woman, लिए हैं, तो अब भगवान extremely बोले चलो beautiful फिर युद्ध woman. शुरू करते हैं, मैंने रेस्ट कर लिया, ये दोनों तैयार So हो जाओ। as Lord saw the बहुत beautiful सुंदर स्त्री form वहां भगवती तुलसी अपने approaching आप में
Lord said to these demons that let us start our fight. ये दोनों लट्टू हो गए. अब Now, इंग्लिश में as बताता Devi हूँ. Bhagavati went on to take a very beautiful form and was passing by, these two demons, Madhu Katab, युद्ध साइड में रहा. started talking in हमारे English साथ युद्ध कर. बोले to नहीं impress the women. आपने रेस्ट किया अब हमको रेस्ट करने दो. And they stopped fighting at that moment. रेस्ट Lord करने से तो said, स्त्री में आ "O सकते हैं. demons, come and fight with me." But these two demons said, भगवान ने "Why भगवती don't you have some more rest?" अभी ये भगवती को कहते हैं कि Now these two demons आप कौन told हो. Bhagavati, "O beautiful woman, who you are?" And Devi Bhagavati remains आप quiet. कहाँ से आई हो. Again the demons ask, "Where have you come from?" ये कुछ बोलती नहीं है. Again the beautiful woman remains quiet. अब ये दोनों उस देवी से चर्चा कर ही रहे थे. Now, as these two demons were getting into conversation with the beautiful women, तुम युद्ध क्यों नहीं Lord कर रहे हो. shouted, "O demons, come and have war और with युद्ध me. नहीं करना चाहते हो तो मुझसे वरदान मांग लो. चलो जो वरदान चाहिए And मांग in लो. case you do not ये want दोनों to उस देवी को fight, इम्प्रेस करने के come लिए and बोले. have a boon बोले हम from इनसे me." वरदान लेंगे तो देवी के सामने छोटे हो जाएंगे. Now, these two demons wanted to impress this और ये beautiful देवी के women, सामने and बोलते they हैं अरे pondered हम लोग that भिखारी if नहीं we हैं would कि तुमसे वरदान लेंगे. ask तुम्हें a वरदान चाहिए boon तो बताओ from हम दोनों तुमको वरदान Lord, देने के लिए तैयार we हैं. would be तुमको क्या belittled. वरदान चाहिए. These demons said, भगवान "Oh, ने कहा we उस do देवी not लोगों ने कहा दोगे वरदान. desire any boon हम from तुमको you. वरदान Rather, देंगे you जो ask चाहिए तुम whatever वरदान you मांगो. want दोनों from रुक us." जाओ चलो. To which Lord replied, "Are you sure that you would give me the boon?" फंसे कि भगवान ने कहा कि And तुम the एक दूसरे को two मांगो. demons replied, "Yes." To which Lord क्या asked, होता "Okay, है. give me the boon भगवान ने that both of स्त्री you से fight with each other मधु और and कैटव put का each other विवाह at करो. death." And hence, in अच्छा this हाँ way, एक Lord एक Sri एक चीज Krishna और भी है. went on to ये kill दोनों and एक एक slay अपनी बुद्धि Madhu and लगाए. Katav. बोले You हम दोनों see, the मरेंगे. story goes something like हमने देख this, लिया यहाँ तो that these two नीचे demons applied their own हमने पूरा brains. चेक कर लिया यहाँ तो पानी ही पानी है. बोले हम मरेंगे. चलो पक्का क्योंकि हमने तो वादा कर लिया. These two demons लेकिन हम said पानी में that नहीं मरेंगे. since there is water all जहाँ हमारा around, स्थान होगा वहीं we मरेंगे. would actually not die भगवान ने in कहा the waters, we would die ये on बोलने a लगे यहाँ तो dry पानी ही पानी है. place. यहाँ तो कोई सूखा है ही नहीं. हम लोग जी जाएंगे. तब भगवान ने उन दोनों को अपनी जंघा पर बिठाया. Now, Lord went on to take these two सबको अपनी demons जंघा पर on his आसान पर thigh, बिठाकर which was a dry भगवान का place, मेल ऐसे करके जंघा पर लूटते हैं ना वैसे भगवान ने दोनों को अच्युतम केशव and making them sit on his thigh, दोनों which was a दोनों dry place. याद कराते हैं Finally, Madhu and श्री Kata were कृष्ण put to an विष्णु end. मधुकैट So, भाग्य Vilvamangal Thakur goes on हे to कृष्ण actually विष्णु make us हे understand मधुकैटभ that को मारने Lord वाले Krishna is हे Sri कृष्ण Krishna, he is Vishnu, and also the slayer of Madhu and Katav. भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे. हे प्रभु प्रभु आप Further in the भक्तों में shloka, अनुकंपिन. आप भक्तों Vilmangal के Thakur ऊपर goes on to say, कृपा "O करने वाले Lord, हो. you are the one who is most merciful upon the भक्तों devotees." के ऊपर अनुकंपा करने वाले. अनुकंपा के चार अर्थ होते हैं. You see, Anukampa actually has four अनुकंपा का एक meanings. अर्थ है दया. One meaning of Anukampa ये is being अनुकंपा merciful. माने आप भक्तों के ऊपर दया करने वाले हो. You are always अनुकंपा merciful को upon the दया devotees. से भी ऊंचा जिसे कहा जाता The है. second meaning of Anukampa is more than दया में एक्शन नहीं होता. mercy. दया और कृपा Mercy में does not have दया action. माने किसी भी दुखी आदमी को देखकर So, दुखी होना इसे दया कहते हैं. being kind is किसी actually दुखी आदमी को being देखकर pained, दुखी होना looking और at उसका दुख दूर करना इसे कृपा कहते हैं. someone. But Kripa तो is भक्त being pained at अनुकंपित somebody's भक्तों के pain ऊपर and दया giving करते some हो. solutions to it. दया ही नहीं भक्त के ऊपर कृपा करते हो. So you not only shower तीसरा your अर्थ है mercy, अनुकंपा but माने also your दया. kripa and blessings. हे कृष्ण Another meaning of Anukampa is आप कृपा karuna. करते हो. You exercise karuna over your चौथा devotees. अर्थ है And the fourth meaning of Anukampa is हे Sahanumuti, कृष्ण that is, आप you किसी empathize की with your सहानुभूति रखने वाले devotees. हो. ये बहुत अच्छा शब्द है. You see, this is a very सह beautiful term. संकुचित करो सह If अनुभूति. you go to break आपके
This word, saha and anubhuti. What does this mean? The feeling that a devotee has in his heart, similar are your feelings. You might have hugely claimed a lover of yours, but he shall always have a limitation to understand your feelings. It is very rare to get somebody who loves you blindly. Even if you get, he would not be able to understand all your feelings. But Krishna is Sehe Anubhuti Bhaktanukampa. Means Krishna is able to understand all the feelings of his devotee. So, O Krishna, O Vishnu, O the slayer of Madan Ketav, O the one who understands the feelings of the devotee. And then Vil Mangal Thakur goes on to say Bhagwan. So by the term Bhagwan, Vil Mangal Thakur goes on to reflect Krishna as somebody who is all complete with Shad Ashwarya. You see, Parashar Rishi was the father of Vil Mangal Thakur. Parashar Rishi went on to give definition of the term Bhagwan. So the one who has in all full quantity, six kind of qualities, he is called as Bhagwan. So the one who has wealth is called as Dhanvan. The one who has good form or roop or beauty is Roopvan. And Lord is referred to as Bhagwan because the six qualities like strength, beautiful, or the beauty. So Bhag are actually six in number, and the one who has them in optimal quantity is called as Bhagavan. Unfortunately, even normal person is referred to as Bhagwan, but the fact is, real Bhagwan is Lord Sri Krishna because Krishna has all beauty. Krishna has all bravery, all the strength. He has all the fame, he has all the money, he is knowledgeable, and he is also Vairagi whenever required. So all the Bhag are present in Sri Krishna, and hence that is the reason Lord Sri Krishna is referred to as Bhagwan by Vil Mangal Thakur. So the meaning of Sri Krishna is done, meaning of Vishnu Madhu Ketav is also done, meaning of Bhaktanukampan is also done. The one who is always merciful upon his devotees, and the one who has six Ashwarya is Bhagwan, and the final one is Murare in the first line. Murare means Mur and Ari. Ari means who kills. So the one who has killed demon Mur. Now imagine one more demon has made an entry. O Shri Krishna, you had gone on to slay demon Mur. Now, let us hear the story of Mur. So this story is mentioned in Bhagvatam, in Padam Puran. Now, Ekadashi Katha of demon Mur, you already know. इसलिए ये सारी कथा भिन्न भिन्न रूप से डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी पाई जाती है। इसलिए आप यहाँ सुनोगे, आप सोचोगे कि वहाँ तो हमने ये सुना था, वहाँ तो ये सुना था। गलत कोई नहीं है, क्योंकि ये कथा लगभग सारे पुराणों में है और थोड़ा अलग अलग रूप से डिस्क्राइब किया गया है। So you see, the same story is mentioned in different form, in different sources. But if you ask me which particular instance I am very fond of, so actually this demon Moor is referred to as five-headed in Shrimad Bhagavatam. So Moor, when you see appeared, basically first try to understand who was this Moor. In the world of Asuras, in the world of demons, he used to actually offer his services like a doorkeeper. वो नहीं महाभारत का युद्ध, महाभारत, कुछ लोग हाथी पर होते हैं, कुछ लोग घोड़े पर होते हैं,
और लगभग वो So, राजा in the Battle of Mahabharat, many rode on elephants while others rode on horses. And you see, some would घोर run संग्राम हुआ, देवताओं ने सारे on असुरों को feet. मारा। मूर ने देखा यार So, when ये the तो fight between demons and demigods went नहीं on, जाएंगे, you कुछ see, तो करना पड़ेगा, Madhuketa saw केवल the यहाँ demons are at a भगवान को भजन कर loss. काम नहीं चलेगा। तब Now, उन्होंने this बहुत demon बड़ी Moor तपस्या की went on to और do a उस तपस्या huge से penance, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। and he was able to ब्रह्मा please जी Lord Brahma. Now, मूर Brahmaji ने कहा presented himself before him, मूर ने कहा मुझे अमर बना दो, and Moor asked Brahmaji मैं that, भी ले लूं, मुझे भी एक ना एक दिन मरना है, make कुछ me और मांगो। immortal. To which Brahmaji मूर ने कहा मुझे expressed his वरदान दो कि limitation. जो बंदा So मुझे Moor स्पर्श went on करेगा to वो ask मर जाएगा, that anyone who touches me shall मुझे स्पर्श die. करने वाला मर So जाएगा। anyone who touches me ब्रह्मा जी should ने कहा die. तथास्तु, Brahmaji मूर ने said, पकड़ so लिया be क्या, it. इसको जो So भी he बोलेगा also, वो went on to पकड़ become a लेगा, kind हम of भी मर जाएंगे। immortal. ये तो बहुत बड़ा चीज मांग लिया। अब ये देवता एक तो वरदान दे देते हैं, फिर यही परेशान होकर भगवान के पास आते हैं, Now, बोलते you हैं see such a contradictory thing that these demigods themselves भगवान जी go on हमको to वरदान देने में बुद्धि नहीं है, offer अकल the नहीं है, हम boon, एक तो वरदान and देते हैं then after being troubled, मूर they के पास reach आते हैं। Hari for solution. अब ये मूर ब्रह्मा से वरदान ले लिया कि Now, जो मुझे टच करेगा वो मर this जाएगा, demon Moor went on और to उस take this समय boon एक from व्यक्ति Sri नहीं Krishna था, that anyone who touches me should द्वापर die. सतयुग समाप्त रहता, Now, you see, this story महाभारत actually belongs जैसे to रघुकुल चला, uh, सूर्यवंश के the राजा प्रतापी राजा रघु Kali Yuga. उस समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, Now, you see, और one of the kings of वशिष्ठ Ragukul was ऋषि वहां performing यज्ञ a कर रहे थे। huge, wide yagna. So Rishi Vashisht was actually the head यज्ञ priest. पहुंचा, Now Moore उस went यज्ञ में on विघ्न देने to लगा, अब reach असुरों का the तो place यज्ञ of होना अच्छा yagna, होगा, and he started creating lot of विघ्न तो obstructions देना in ही the है। yagna. अब रघु महाराज खड़े हो गए, धनुष बाण हाथ में Now लेकर, Raghu और Maharaj got प्रभु outraged at this. वशिष्ठ जी ने कहा रुको रुको Now महाराज, Rishi शांत रहो, Vashisht asked king बोलने वाले को क्रोध नहीं to करना होता है, stay at his place. मैं केस में संभाल लेता हूँ। Rishi रघु Vashisht महाराज said, O बैठे, king, calm down your senses. वशिष्ठ जी I ने will कहा handle the कैसे issue. किया, Now, Rishi Vashisht वशिष्ठ went जी on to चिंतित हो गए, apply महाराज strong brains of his. तू हमारे साथ युद्ध करेगा, हमको मार भी देगा, लेकिन ऐसे लल्लू पंजू को मारने से कोई तुम्हारा यश नहीं बढ़ेगा। किसी बड़े आदमी के साथ युद्ध करो तो तुम्हारा नाम होगा, पेपर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में तुम्हारा नाम आएगा, लेकिन ये छोटे So छोटे you see, आदमी। it was told to Moore मूर्ख ने that कहा अच्छा, must you fight with बड़ा somebody बलवान who is लग रहे हो, established. Otherwise, your वशिष्ठ जी ने name कहा goes नहीं on to महाराज, go for बहुत बड़ा आदमी defamation. है, उसके साथ युद्ध करके दिखाओ तो मानूं कि नहीं था मूर, और यमराज के साथ भिड़ गया। Now, this यमराज Moore ने was कहा अच्छा told to यमराज पाताल contest में नरक में, against चलो Yamraj. यमराज जी के पास। So this Moore went on to यमराज जी reach दंड देने में बैठे थे, यमराज Yamlok, यमराज खड़े and हो गए, Yamraj was यमराज ने कहा sitting there to do महाराज तू justice. बहुत बड़ा आदमी है, Now मुझसे Moore युद्ध went करना है। on to call यमराज ने for कहा बड़े हैं Yamraj. लेकिन इतने बड़े नहीं है। बोले तेरे से भी कोई बड़ा है? बोले हाँ, कौन? Yamraj said, विष्णु। look, there is somebody by the name of विष्णु के Vishnu आगे मैं who is थोड़े far खड़ा हो better सकता placed than me to fight. हूँ। यमराज ने कहा Now छोटे Vishnu मोटे लोग at हैं, that point of बताओ time मुझसे भी again बड़े was कौन है? resting in his cosmic ocean. कहाँ रहता है वो विष्णु? बोले क्षीर Now सागर में। these demons asked, where does this Vishnu reside? क्षीर सागर। अब जब विष्णु के पास गया, विष्णु बहुत बड़ा आदमी है, तू युद्ध कर हमसे। विष्णु ने कहा देखो हमसे भी एक बड़ा आदमी है। Now this demon went and called for Vishnu for fight. ब्रजराज वृंदावन Vishnu said that there is somebody more who is far better placed हम than उसके me. अवतार पुरुष And हैं, he said, स्वयं भगवान तो ब्रज में है। you see, Lord is there in Brij Vrindavan. तो मूर भगवान श्री कृष्ण के पास आया, Now भगवान Moore went on to come to Sri अरे इसको Krishna. टच तो कर नहीं सकते, Now Krishna had realized that I can't अब touch क्या किया जाए? this. Now what to do? तो आया भगवान श्री कृष्ण के पास, मुझसे युद्ध करो। अब कृष्ण तो मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, कृष्ण कहते हैं हम डरपोक के साथ युद्ध नहीं करते। Krishna says, no, we don't fight with the coward.
Mur goes on to say, त्रेता युग how के वहां 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 can कितने I युग हो be गए? a coward? त्रेता युग समाप्त हो गया, द्वापर आ गया, Now मैं you कौन see, तेरे को Treta Yuga डराने is coming आऊंगा? to an end मैं and डरपोक Dwapar नहीं is हूं। about to begin. बोले हाँ, डरपोक नहीं तो क्या, शास्त्र में And तो you लिखा call है। me लेकिन a कृष्ण ने बोला coward. तो अपना But you see, he was not a हाँ, coward, मैं but Krishna डरपोक was नहीं हूँ। actually trying to incite anger in him. बोले Krishna मेरे said, look, we डरपोक don't नहीं हूँ। fight बोले with डरपोक नहीं such तो क्या, people. तेरी धड़कन देख कितनी तेज हो गई है, तेरे धबकारे कितने बढ़ गए हैं। बोले मेरे धबकारे कहाँ बढ़े, देख ले Krishna said, मेरे look दिल को टच how करके देख ले। fast your heart is beating. कृष्ण ने अपनी बातों में ऐसा फंसाया Krishna went in to कि वो entangle उसने him in such a बोला manner क्या था that he कि जिसको forgot टच करेगा वो मर जाएगा। the कृष्ण boon ने कहा अपने that दिल को टच करके whomsoever देख ले। उसने shall अपने he दिल हार्ट को touch, टच किया, वहीं पर he would चमत्कार die. शुरू हो गया। Krishna said, oh demon, touch your heart and feel. And this इस demon प्रकार touched his heart, and that is how कृष्ण ने अपनी बुद्धि से मूर he को was मार ended. दिया। तो एक पुराण में, किसी अन्य पुराण में ऐसी भी कथा है, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर मूर को मार दिया। So another story goes something like this, that Sri Krishna killed this demon by his disc. But जब से whatever be कृष्ण ने it, मूर असुर को मारा है, तब से you इसका see, नाम हो गया है। from the time he killed the demon Mura, आप विचार that's how he is called as Murare. एक लाइन को गाने में आधी मिनट भी नहीं लगती, लेकिन जब इस पर चिंतन किया जाए तो घंटों भर हम इसे आस्वादन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आइए भाव से एक बार गाते हैं। Let us sing this all together. श्री कृष्ण विष्णु मधु के भारे, भक्तानुकंपीन भगवन मुरारे, त्रायस्व मां के शवलोक नाथ, त्रायस्व मां के शवलोक नाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार श्री बिल्वामंगल ठाकुर कृष्ण के अनेकों नाम, ये सब लीला परक नाम है। You see, in this manner, Bilmangal Thakur invokes the different names of Sri Krishna. हाँ भाई हाँ, मैं ये Now सब जानता imagine हूँ, if, ठीक है। if Lord Krishna was to tell Bilmangal Thakur, okay, Bilmangal Thakur, I know all these names of mine. What is it that you desire? So Bilmangal Thakur in the second line goes on to say, Trayasvamam, O Lord, Tran Karo means, O Lord, help me liberate myself. I am entangled in this Bhavsagar. Help me to liberate myself. I have drunk the water of this material world by way of calm, krodh, lobh, and moh. O Krishna, help me to free myself from this Bhavsagar. Dear devotees, kindly understand here that if at all Lord appears here at this point of time, and imagine if Lord goes on to say, okay, well, Mangal Thakur, I agree to what you say, but what kind of liberation do you seek? बोले किस टाइप का उद्धार चाहते हो? बोले जैसे आपने ब्रह्मा जी का उद्धार किया, शिव जी Now, का उद्धार किया, this ऐसा statement उद्धार goes on to answer that the way you have liberated मंगल ठाकुर कहते हैं, Sri त्रायस्व माम, Shankar, मेरा I परित्राण also करो। want that kind of liberation. केशव, केशव का अर्थ होता है क माने ब्रह्मा Keshav means Keshav और stands ईश माने for शिव K और means व माने Brahma उसमें रखने वाला। and Sh means केशव, Shiv. उसमें तीन शब्द है, क, So, ईश और व। so Ka, क माने Ish and ब्रह्मा। Va. अब ब्रह्मा को Ka ब्रह्मा means क्यों बोला? Brahma. क को ब्रह्मा Now, क्यों why बोला? Brahma is क्योंकि called as Ka? वर्णमाला में प्रथम अक्षर है Because क। in the सृष्टि के प्रथम अक्षर Varnmala, है the क, first letter इसलिए is ब्रह्मा को Ka, क कहते हैं। and the first entity is तो Brahma. जैसे आपने ब्रह्मा को और
So Ish represents Shiv and Va means the one who can control. ब्रह्मा और शिव को अपने वश में रखते हैं, इसलिए इसको केशव कहते So हैं। Krishna keeps Brahma and Shiva under his control, and that is the reason. You see, बहुत सुंदर चिकने घुंघराले बाल हैं, इसलिए इनको केशव कहते हैं। so the one who has dark curly hair is called as Keshav. अपने वश में रखने। अच्छा, But कृष्ण the ब्रह्मा real और meaning is that the one who keeps under control Brahma and Shiv. जो लीडर होते हैं, Now the question can be how he is able to keep Brahma and Shiva under his control, not on basis of anger, annoyance, or power, कर वश में नहीं रखते, not by threatening or frightening them. Krishna keeps Shiva and Brahma under his control. Krishna, by his love, by his form, goes on to keep engage Brahma and Shiva. You see, to rule is something different as a meaning, and the other one is give them so much of love that they come under your control. को भी कृष्ण ने कहाँ वश में किया है, बताओ? कृष्ण ने हमारे ऊपर कोई सुदर्शन चक्र छोड़ा है कि भाई मेरे से प्रेम करना ही पड़ेगा? So you see, do you think Krishna has put any one of us under his control? No. Krishna actually has given his full independence. प्रेम से, But the fact is, Krishna, by his love, by his pastimes, goes on to control his devotees. So the shloka says, O Lord, by your beauty, you have been able to put Shiva and Brahma under your control. Kindly liberate me. Now, assuming if Krishna was to say that, how do I help you liberate? Then Vil Mangal Thakur goes on to utter the next word. So Vil Mangal Thakur says, Oh Krishna, you can definitely liberate me because you're Loknath, because you are the Lord of the people. You are the Lord of the people. You are Nath, or the controller of everything in this material world. So, O Loknath, kindly help us liberate ourselves. So, in this manner, Vil Mangal Thakur, invoking the different names of Shri Krishna, goes on to request Krishna for liberation. Before we move on to the third shloka, let us have a small announcement over here. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So once again, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर यह द्वितीय श्लोक जिसका हमें आज आस्वादन किया आपके मुखारविंद से, जिसमें कि बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा हमने श्रवण की और महिमा श्रवण करते हुए उनके अनेक अर्थ भी आज आस्वादन किए। तत्पश्चात बहुत ही सुंदर विष्णु के अर्थ और मधुकेटव की वह सुंदर लीला और देन मुरारे के विषय में भी बहुत सुंदर आपने इस कथा को समझाई एंड उसके पश्चात भी बहुत ही सुंदर केशव के ऊपर और त्रायश्वमाम, इन सभी से भगवान के समस्त नामों को पुकारते हुए यह सुंदर बिल्व मंगल ने प्रार्थना की कि आप प्लीज मेरा उद्धार कीजिए, जिस प्रकार आपने ब्रह्मा जी तथा शिव जी को उनको अपने प्रेम से वशीभूत करके रखा है, इस प्रकार क्योंकि आप लोकनाथ हो, समस्त चराचर जगत के नाथ हो, समस्त चीजें आपके अधीन है। तो यह सुंदर श्लोक प्रभु जी ने इन पर एक एक शब्द पर कितनी सुंदर व्याख्या बताई हमें। सो वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। यह द्वितीय श्लोक वाकई में बहुत अद्भुत है और इस पर जो आपने प्रस्तुतिकरण किया, दैट वाज इवन वंडरफुल। थैंक यू प्रभु जी। और यस, we'll have a short darshan of our Shri Radha Govind Goswami and then we'll move forward for the further katha. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna. So here we have the wonderful darshan of our Shri Radha Govind Goswami और हमारे इस श्री निकुंज गोपिका माता जी ने हमारे माता जी के स्मरण में सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है। तो हमारे श्री विजय कृष्ण भास्करम्बा कोगनाती माता जी जिनके स्मरण में सुंदर कथा का आयोजन किया है, उन्होंने बहुत सुंदर गौ सेवा की है यहाँ पर माता जी ने, और प्रतिदिन इसी प्रकार गौशाला में यह सेवा होती रहेगी as long as this katha is going on. So very grateful to this wonderful family, हमारे मुकम्मला फैमिली और हमारी चक्रवाला फैमिली, जिन्होंने यह सुंदर सहयोग किया है, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ पर इस विषय जिसको हमने प्राय खाली पढ़ा है, ओवरव्यू किया होगा, बट इस प्रकार से कभी इसका व्याख्यान नहीं सुना होगा। तो ऐसी सुंदर कथा हम यहाँ पर आज श्रवण कर रहे हैं। श्री गोविंद दामोदर श्रोतम, और गोविंद यानी जो कृष्ण को प्रिय ऐसी गौ माता भी है। तो भगवान को गोविंद कहते हैं क्योंकि गायों का पालन करते हैं, इसलिए उसको गोविंद भी कहते हैं। और ऐसे गोविंद दामोदर श्रोतम को हम यहाँ पर शरण कर रहे हैं। एंड वेरी ग्रेटफुल टू दिस वंडरफुल फैमिली कि जिन्होंने ये सुंदर सहयोग किया है, जिससे कि हम लोग गौ माता की सेवा कर पा रहे हैं यहाँ पर प्रतिदिन हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला में। एंड विद दैट वी आर हियरिंग सच अ वंडरफुल टॉपिक which is very essential for all us. हम सब भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, but somehow somewhere we are falling short, जिससे कि वो प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा है। तो बिल्वा मंगल की यह सुंदर स्तुति है जो कि हम यहाँ पर लगातार 7 दिनों को श्रवण करेंगे और उनकी व्याख्यान प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण करने वाले हैं। तो ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है यहाँ पर हमारे इस मुकम्मला फैमिली और चक्रवाला फैमिली के इस सुंदर आयोजन से, जिससे कि हम ये कथा श्रवण कर पा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला की गौ माता की सेवा भी कर पा रहे हैं। वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल टू दिस फैमिली। एंड इसी प्रकार से प्रार्थना करेंगे हमारे विजय कृष्ण माता जी के लिए कि वे निरंतर भगवान की सेवा में इसी प्रकार लगे रहे और जहाँ भी है भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की सेवा में बने रहें। और उनके स्मरण में हम यहाँ पर यह सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित भगवान की उन पर विशेष कृपा है। एंड once again thank you so much to this family। एंड हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस इसी प्रकार से यह भक्ति का कार्यक्रम चलता रहे, हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर इन भक्तों के स्मरण में कथा श्रवण करते रहिए, उनका उद्धार हो और हमारा भी उद्धार हो। सो ये बहुत ही सुंदर कार्य है। यहाँ पर हम जिनके स्मरण में करते हैं उनका तो उद्धार निश्चित होता ही है, परंतु साथ ही साथ हम ऐसे लाखों जीव हैं जो कि इस प्रकार कथा श्रवण करके इनका लाभ ले पा रहे हैं। तो वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच निकुंज गोपिका माता जी एंड विनीत प्रभु, उनके जो भाई हैं जिन्होंने सुंदर आयोजन में पार्टिसिपेट किया है, उनमें सहयोग किया है हमें, जिससे कि हम सब ये सुंदर कथा, ये सुंदर कार्यक्रम देख पा कर श्रवण कर पा रहे विशेष। सो थैंक यू सो मच। और यस, इसी प्रकार से यदि आप भी हमारे साथ में गौशाला के माध्यम से सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो हम आप सभी निवेदन करते हैं, प्लीज आप हमें संपर्क कीजिएगा ऑन आवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स थ्रू विच यू कैन अप्रोच अस फॉर एनी सच काइंड ऑफ गो सेवा रिगार्डिंग भागवत कथा एज वेल। और इस प्रकार प्राय हमारे जीवन में इस प्रकार के दिन आते हैं जिसपे हम इस प्रकार की गौ सेवा करके उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं और गौ माता की तथा हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है, प्लीज do contact us for any such a seva regarding whether it's your birthday, whether it's your anniversary, whether or any आप किसी के भी स्मरण में किसी भी प्रकार की सेवा करना चाहते हो श्री राधा गोविंद गौशाला में, तो आप प्लीज यह नंबर है जो कि आप नोट कर सकते हैं, उस पर हमें अप्रोच कर सकते हैं, विच इज 7567545555। आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा यहाँ पर। विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व श्री this Go Matas on behalf of your family, on behalf of you as well. So please do contact us। और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं हमें seva4pek@gmail.com पर। And then you can visit our website where you can see the activities of Shri Radha Govind Goswami on www.perfectseva.com।
सो आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपने जीवन में आने वाले इन समस्त पर्वों को हमारे साथ में, हमारी श्री राधा गोविंद गौशाला के बीच में उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। उनको फीड कराकर, उनको गौमाता की सेवा करके, उनको ग्रास सेवा देकर, इस प्रकार की there are varieties of sevas available. You can adopt those cows as well, and which will be wonderful कि हम अपने जीवन में इस प्रकार गौ माता की सेवा करें, उनको अडॉप्ट करें, और भगवान की प्रिय गोविंद, भगवान जिसे कहते हैं, जिसे भगवान गोविंद कहते हैं, कि गाय को प्रिय है, तो ऐसी सुंदर गौ माता की सेवा कर सकते हैं अपने जीवन में आने वाले उत्सवों को सेलिब्रेट करते हुए। साथ ही साथ यू कैन अडॉप्ट दिस काफ्स एज वेल, क्योंकि हमारी गौशाला में बहुत सुंदर सुंदर काफ हैं जिनको आप लाइफ टाइम अडॉप्ट कर सकते हैं। यू कैन डू सेवा बाय मंथली सेवा एज वेल। आप सब इस प्रकार से जुड़ सकते हैं इस सेवाओं में और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। So please to contact us for any such sevas. And now we request His Grace LalGovindDas to kindly lead the further program. Hare Krishna. Thank you. विकरे तु कामा। The third shloka goes something like this, which is there on the screens before you. पितचेत्तवृत्तिः दधियादिकं मोहवशाद वोच। दधियादिकं मोहवशाद वोच। गोविंद दामोदर माधवेति। So in the third shloka, Mangal Thakur goes on to say, श्री बिल्वा मंगल ठाकुर दूसरे श्लोक में भगवान से अपने उद्धार की कामना करने के बाद, so after having desired his liberation from the Lord, in the second shloka, Mangal Thakur, in the third shloka, goes on to give a description of the gopis of Brij. So from third shloka till shloka number 9, Mangal Thakur goes on to give description of gopis in Brij. Some young gopi, some married gopi, some gopi who has gone on to become a mother. So all kind of gopis staying in Braj, what do they do, has been mentioned by Mangal Thakur. So they are only engaged in one job, and that is Govind Damodar Madhaveti. ये सब गोपियां ब्रज में रहकर गोविंद दामोदर माधव, बस इसी प्रकार से। अब ये जो श्लोक आ रहे हैं 5, 6, 7 श्लोक, ये हम साधक भक्तों के लिए बड़े उपाध्यायी हैं। So shlokas number 5, 6, 7 are very important for we sadhak bhakt, sadhak devotees. You see, when gopis are mentioned, must we first understand who are these gopis? We all are devotees of Bhakti Marg. We all are Prem Marg devotees. So you see, the ideal for Sadhak Bhakt, Sadhak devotees is actually the gopis of Braj. We must treat
on the path of ideals and morals set by these gopis. गोपियां कैसे जीवन जीती हैं, कैसे अपने दिन बिताती हैं, How these वह गोपियां gopis क्या pass करती हैं, their days, what do they do बहुत throughout the सुंदर day? वर्णन Very beautiful प्रभुपाद ने description किया है। has been given by Bilbamangal हम Thakur. रोज मंगलाचरण में गाते हैं, So you आराध्य see, भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम every वृंदावन, day in हमारे Mangal, आराध्य Mangalacharan, we go on भगवान to कृष्ण हैं, say that our हमारे Aradhya is ब्रज वृंदावन Radha के Shyam Sundar, our हमारे destination is आराध्य Vrindavan, गोपियां हैं, and our idol are हमारा कृष्ण gopis. प्रेम है, Our objective is हमारा Krishna प्रमाण है Prem, and our श्रीमद् evidence is भागवतम। Shrimad Bhagavatam. सो गोपियां हमारी आदर्श So है। gopis तो are our चैतन्य प्रभु को idols. पूछा आप कौन, Once Chaitanya तो Mahaprabhu was asked चुप रहे, who नच he नरचर is. He replied नवनीत something नेत्र, like this: मैं तो गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासानु I am दास, nothing but गोपियों के भरतार गोपीनाथ, गोपियों के पद चिन्हों पर चलने वाले I दासों के am दासों का दास हूं मैं। the slave of the slaves of the slaves of the one who गोपियां treads हमारी on the path आदर्श of है, gopis. और हम सबको बाहर से भले हम So, पुरुष हैं, you see, लेकिन we हमारी all भावना, are हमारी भावना गोपियों की तरह होनी चाहिए, the devotees who बिना should गोपी take बने the footsteps of मुझ में प्रवेश gopis, नहीं मिलेगा। because without becoming a और gopi, ब्रज we में would भी not get an गोपियों के entry रास into लीला में Brij. We might be appearing male from प्रवेश नहीं outside, मिलेगा। but then our तो bhav should be that of a गोपियां gopi. कैसी हैं, क्या करती हैं, So, how the इन तीन gopis श्लोकों में are, what do they बिल्वामंगल do? ठाकुर Will Mangal Thakur goes on to describe in the upcoming गोविंद shlokas. दामोदर स्तोत्र के इस तीसरे श्लोक In the में third shloka of Govind बिल्वामंगल Damodar ठाकुर shlok, Will गोपियों की Mangal Thakur मनः स्थिति का वर्णन goes करते on to हैं। describe सुंदर the है mental एक एक state श्लोक of सुंदर है। the gopis. गोपियों की मनः स्थिति कैसी है, So, what is the mental state of the आज gopis? हम जितने भी Is लोग described हैं, जैसे by माताएं Will Mangal Thakur. सुवर्णा माता, वो भी बिजनेस करती हैं, प्रायः माताएं या प्रभु जी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर घर का काम करना सबसे बड़ा बिजनेस है। एक You घर see, का today काम करना, people are engaged in one or the other enterprise, you see. तो हमें ये कैसे करना चाहिए, ये आर्ट, So, how ये we कला should be engaging in this art of enterprise or business is what we must learn from the गोपियां कैसी है, gopis. गोपियों की मनस्थिति, बाहर से कार्य कुछ और है, अंदर से मन कुछ और है, ये सीखना है। So, you see, apparently it might जितने आप appear that they're सीखेंगे doing उतने something, सीखेंगे उतने but समझ from में within the आएगा। heart, they're doing something ये else. आर्ट हमें सीखना है। This is the art that we अब must देखिए learn. श्लोक का प्रथम शब्द क्या है, विक्रेतु So, looking at the कामा, shloka, what does the shloka say? विक्रेतु कामा, विक्रेतु माने बेचना, सेल करना, Vikritu बिजनेस means to करना, sell, जॉब करना। doing business or engaging in कामा a माने job. कामना, Kama means गोपियों की चर्चा हो desire रही है ना, or गोपियों की kama. चर्चा हो रही है, तो यदि मैं आपको पूछूं गोपियों की कामना क्या थी, So, तो what was the विक्रेतु desire of अपना माल gopis? बेचना। The desire was कौन to माल sell बेचना, गोपियां their अपना माल बेचना stuffs. चाहती थी। अच्छा, कौन सा माल बेचना चाहती So, थी, what was that तो stuff? देखिए दूसरी लाइन का पहला शब्द क्या है, Look at the first दध्यादिकम। word of the second line, that is दध्यादिकम को ब्रेक dadhyadikam. करेंगे तो क्या होगा, दधी, So, if you break this word, आदिकम, it is dadhi दधी माने plus दूध, adikam. Dadhi आदिकम means माने curd, और एक्स्ट्रा, adikam विक्रेतु, means दही, etc. etc. दूध, माखन, So, मतलब ये सब milk, curd, butter, etc. दधी etc. So, आदिकम, selling दूध milk, माखन, butter, विक्रेतु कामा, etc., etc., was the work फिर बात of करते the हैं। gopis. तो गोपियों की कामना, जैसे रोज सुबह उठकर आप लोगों की भी कामना होती है ना, हमारी So, भी कामना similar घर बिक जाए, is the हमारा भी desire घर of बन जाए, yours, हमारा घर like बन जाए, that you want one particular work to be established at your हमें workplace, कॉन्ट्रैक्ट मिल or जाए, सीसीटीवी पूरे भारत में सब जगह लगा दें, सबकी कामना होती or है। something like that. सो विक्रेतु कामा, So, दध्यादिकम, Vikriti दध्यादि माने Kama, बेचने की कामना
होती So थी? the desire of अच्छा, किसकी कामना selling होती थी? butter, ऑलमोस्ट milk, सभी etc. गोपियों की। So this इतना exactly was the desire कामा, इतना of every क्रेतु gopi. माने बेचना, कामा माने कामना, बेचने की कामना। तो क्या बेचने की कामना? तो So the दूध, desire was दही, to sell दही, curd, माखन, milk, butter, etc. was the desire of the तो gopis. किल, किल माने अखिल। So kill here कामा, represents Akhil. काम शब्द है, विक्रेतु काम, उसमें से अ निकाल दो तो हो जाएगा अखिल। अखिल, अखिल, अखिल माने सारी गोपियों की। मतलब एक दो Means गोपियां जो the अपने घर में desire रहती of थी वो all the सारी गोपियां ही थी। gopis जैसे was विवाह to में sell their milk, कुछ गोपियां butter, विवाह and विवाह में ghee. विवाह। तो विक्रेतु कामा अखिल, किल, किल माने सभी, सभी गोपियों को। तो सभी गोपियों को दूध, दही, माखन बेचने की कामना थी। इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये गोपियां कौन थी? तो कहते हैं गोप कन्या। So who were these gopis? गोपों की कन्या, अखिल These गोपों की gopis कन्या, were सभी गोपों की कन्या। अब गोपों की the कन्या जो daughter है of ये Gop. दूध, दही, माखन बेचने की इच्छा है। आप जैसे व्यापारियों की कन्या होती तो कुछ और बेचने की इच्छा होती है ना? माल अलग है, बाकी वृत्ति जो है वो सब सेम है। तो विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, सभी गोपों की कन्या So the desire of की कामना रखती थी। gopis दूध, दही, was to माखन बेचने sell की इच्छा milk, होती। butter, and curd. और इसलिए क्या होता था? रोज And सुबह for उठा this करके, reason, चाहे such बरसाना हो, gopis, गोकुल हो, चाहे every वृंदावन हो, morning when they ये would wake सभी up, गोपों की कन्या, ये सभी गोपियां so all पृथ्वी these पर gopis, माखन be it घी बेचने के Barsana, लिए Vrindavan, घर से निकल पड़ती थी। they would carry ओके, the तो pots गोपियों of की milk, क्या है? butter, इच्छा and क्या curd है? on their करने head. क्या जा रही है? अपने So मन what is their वांछित desire? फलादिकम, दूध, दही, They are माखन carrying milk, butter, or curd to be sold. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. There is some Hare Ram, technical Ram Ram, error. Hare Hare. I see some technical error over there. So for that reason, I see Prabhuji is exited from the line. So meanwhile, हम वैसे समय हो चुका है, but still we'll wait for a moment and let's see what comes out. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, just give me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So, there's no point of waiting now. I just see some error from Prabhuji's side, so I guess he might not be able to join us right now. So, मैं निवेदन करता हूँ हमारे कमला माता जी से कि आप नरसिंह आरती गाइएगा 2 मिनट. By the time I'll see if the things is अगर कुछ फिक्स हो सकता है तो I'll just request कमला माता जी to kindly sing नरसिंह आरती for 2 minutes. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale. Oh Krishna, what happened? Okay. Sorry. Okay, Sorry, Mataji, Prabhuji. no problem, Mataji, no problem. Anyways, I'm just trying my level hard to bring back Prabhuji, but somehow due to internet connectivity, we have lost connection with Prabhuji. So हम लोग वैसे समय हो चुका है. It is going to be past 12 now. तो हम लोग सीधे आरती करते हैं, श्रीमद् भागवतम की आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं और इस सत्र को विराम करते हैं. So sorry for the inconvenience caused suddenly, but हम सब भगवान की कीर्तन कर लेते हैं और ये जो शेष श्लोकास हैं उनको आने वाले दिनों में प्रभु जी से श्रवण करेंगे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम.